Hello everyone, this is Jankit Bhatt here on behalf of the Institute of Creative Arts. We'll be going through the video tutorial today of the Photoshop. Photoshop. The file extension of Photoshop is .psd, Photoshop document. Photoshop is very essential software in terms of graphic designing, in terms of web designing, in terms of digital marketing, in terms of animation, and in terms of VFX as well. It is very important to go step by step in a proper manner in the Photoshop. Learning of Photoshop is not at all that difficult, but applying that in a right way is very important. I always believe and tell my students that making a good design is the one thing, but making a good design and putting it on a wrong place is the waste of a design. So in the Photoshop, same thing applies. Learning Photoshop is important, but learning in the right perspective, in the right way is even important. Now we all know that Photoshop is a raster-based software. Raster and the vector, these are the two different things which we'll be covering up in the concept of graphics lecture if you have not done. Now I will go to File, Open, and I'll open some photograph. Okay, I'll open this photo of a flower. Now, the first thing that the image editor or a Photoshop artist starts when they do their job is to duplicate the photo. You need to go to image, you need to go to duplicate, and you gotta do it. Okay, don't rename it. Now, the image which is with the name of a copy is a duplicate image, and this is the original one. Cancel the original one. Why to cancel the original one? For example, when you're working in a company, so the images will be given to you by the client. Client might go to the site and do the shooting of that particular photo and give it to you. Client might purchase that photo from somewhere and give it to you. He might have kept the copy, he might not have kept the copy, so it is very essential for you to maintain a copy and work on a duplicate copy. When you cancel this, so you will be canceling the original copy and you'll be completely working on the duplicate copy. As a designer, making a good design is very essential, but making a good design in a short span of time, it's even much more important in today's era. So while working with any of the software of graphic designing or the multimedia, you need to understand is that you need to make a habit of using a shortcut key. आपको shortcut key use करने की आदत रखनी पड़ेगी, right? जैसे कि time by time I'll be dictating the shortcut keys over here. So I'll just put this tool panel over here. Control 0. Control 0 is a shortcut key to fit image to the screen. Now, the basic requirement of a Photoshop artist is to make a perfect selection. Perfect selection always helps the artist to go ahead with it. आपका आर्टवर्क कितना भी अच्छा हो लेकिन आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो it will be of no use. So for that, selection करने के लिए we have many tools here. We have a marquee tool, we have a lasso tool, we have magic wand, quick selection, we have a pen tool, we have quick mask, we have some more options in the latest version of Photoshop like color range, select, and many more. As the lecture advances, I'll be teaching you that. Now when we go further here, I'll be doing it, I'll be working with the first selection tool, that's a marquee tool. And before doing with that, I'll open a blank image. Blank image is nothing but the blank file, which will be needing it here. Pixels, and I will go to international standard paper. Inside that I'll take A4. A4 is a standard paper size in India. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको पता नहीं कौन सा साइज डायमेंशन लेना चाहिए आपकी इमेज का या आपकी फाइल का, तो A4 ले लीजिए. आफ्टर डूइंग दिस, अगर मुझे ये इमेज से ये इमेज स्विच करना है तो कंट्रोल टैब भी यूज़ कर सकते हो आप. शॉर्टकट कीज हम बाद में देख लेंगे. अभी के लिए इफ़ आई एम टेकिंग अ मार्के टूल हियर, आई विल टेक द मार्के टूल एंड inside the marquee tool I will make the selection, and after making the selection I want this part of image to go in the blank image. ये part of image blank image पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे blank image पे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा. इमेज को आप यहाँ पे रख सकते हो. आप वापस यहाँ पे आइए, आपको सिलेक्शन रिमूव करना है तो आप कंट्रोल डी यूज़ कर सकते हो. कंट्रोल डी यूज़ करने से सिलेक्शन चला जाएगा. अगर आप सिलेक्शन बनाते हो यहाँ पे एक सिलेक्शन है और आपको फॉर एग्जांपल एक और सिलेक्शन रखना है, तो मेरा प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पर नीचे चला गया था. आई जस्ट कीप इट अप. आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा व्हेन एवर यू वर्क इन द फोटोशॉप. सिर्फ न्यू सिलेक्शन है तो एक ही सिलेक्शन अलाउड रहता है. इट्स जस्ट वन सिलेक्शन अलाउड. अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन ऐड द सिलेक्शन.
you can add the selection. See, alag se bhi and same also. When you click here, so you can subtract the selection by doing it here, by doing it here, by doing it here, by doing it here. आप add और subtract कर सकते हो. And the third one is intersect to select. It means आपके selection area में जो भी part आएगा वही रहेगा, दूसरा part नहीं रहेगा. Over here. And after this, अगर आप selection remove करना चाहते हो तो Control D press कीजिए, selection remove हो जाएगा. And then now next option is marquee tool में feather. Feather means the smoothness. For example, ये इमेज में जब आप यहाँ पे आए तो एजेस एकदम शार्प है. मैं जूम टूल लेता हूँ, यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जूम टूल यहीं पर है. सी इट इज़ फोटोशॉप इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वी हैव टू बी अ क्रिएटिव पर्सन. सो हम ऐसे नहीं सीख सकते. ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर एरोप्लेन होता है, वो आपको समझना पड़ेगा. सो अगर कोई टूल बीच में से आता है तो ऐसा नहीं है कि ये टूल बेसिक है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. यहाँ पे आके आप कंप्लीटली जूम इन जूम आउट कर सकते हो, राइट. सो डोंट गेट पैनिक अबाउट इट. नाउ कंट्रोल टैब प्रेस करने से मैं पहली इमेज पे आ गया. यहाँ पे मार्के टूल लेता हूँ और यहाँ पे फेदर दे देता हूँ. फेदर देने के लिए आई विल बी गिविंग एजेस. फेदर मतलब जैसे बर्ड का या कोई एरियल का फेदर होता है वैसे ही ऑप्शन रहेगा. एजेस विल बी कम्प्लीटली सॉफ्टर. Okay, edges will be smoother. Edges will be smoother, so it will help an image to blend with the background. Okay, so first of all, I'll take a marquee tool here, and then I'll put it as a feather, depending on your size. अगर मैं 50 दे देता हूँ feather और select करता हूँ खाली 2 pixels, तो it will say कि आपने select किया उतना pixels, उससे ज़्यादा pixels smooth हो जाएगा. So what will remain? Nothing. So मैं 50 pixels देता हूँ और यहाँ पे इसे selection बना देता हूँ. अगेन देखिए 50 पिक्सल्स नहीं है ये. सो आई हैव टू रिड्यूस द साइज. आई विल मेक इट 20. नोप, अगेन इट्स वेरी स्मॉल एरिया, तो 10 पिक्सल्स दे दिया जाए यहाँ पे. एंड देन विल जस्ट सिंपली सेलेक्ट इट आउट हियर. फॉर माई इट्स नॉट अ इवन गेटिंग वर्थ इट इफ यू कैन चेक इट आउट हियर. सो आई विल सिंपली गिव इट 5 पिक्सल्स. Okay, see warning, no pixels more than 50% selected. So I think image is बहुत छोटी है. अगर image की size देखना चाहते हो आप, तो आप image में जाके you can go to image size. Image size is like in the pixels. It's very big enough. इतना छोटा नहीं है. But feather is not allowing it that to go for. So I will take another bigger picture than this one. Okay, ये picture पे जाते हैं हम लोग. और ये picture पे जाने के बाद I will make the selection. And आफ्टर मेकिंग सिलेक्शन मैं F प्रेस कर रहा हूँ ये वर्क एरिया को नॉर्मल करने के लिए, और प्रॉपर्टी बार को नीचे कर दूंगा. यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा. एज यू कैन सी, जूम करते हैं यहाँ पे, और जूम करने के बाद सी जो इमेज का फेदर है वो एजेस से सॉफ्टर है, और जिसका फेदर नहीं है वो एजेस से सॉफ्टर नहीं है. वापस ये फ़ोटो पे आते हैं. कंट्रोल डी सेलेक्ट, मार्के टूल लीजिए. इस बार फेदर में 0 रखता हूँ, और 0 रखने के बाद मैं फेदर को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ. सी यहाँ पर मैंने फेदर 0 रखा. डोंट लुक एट द साइज ऑफ द इमेज, लुक एट द स्मूथनेस एट द एजेस. यहाँ पे फेदर मैंने 0 रखा, वहाँ पे शार्प है, और जहाँ पे सॉफ्ट रखा वहाँ पे स्मूथनेस है. राइट. सो कंट्रोल 0 करता हूँ मैं यहाँ पे. एंड रिमेंबर वन थिंग, आप जो ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के एंड में यू पुट अ नेम दैट यू हैव अटेंडेड द लेक्चर. सो मुझे पता चलेगा कि किसने लेक्चर अटेंड किया है. कोई डाउट रहेगा सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू पीपल. ऑलरेडी वी हैव अ contact communication with us, so apparently I'll share my email ID also with you in case if you're facing any kind of a trouble in practice of the files. तो मैं remote access लेके आपका problem solve कर लूँगा. Don't worry about that. Okay, moving ahead over here. Okay, see अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा था. ओके, शायद मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट टू सेलेक्ट में था. आई विल गो टू ऐड सिलेक्शन. ऐड सिलेक्शन में आई विल हैव कीप दिस एज अ 20 पिक्सल्स, एंड देन मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ पर. तो सी
यहाँ पर फेदर रखा है, वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड होता है, बैकग्राउंड के साथ मर्ज होता है। यहाँ पर फेदर नहीं रखा है, वो मर्ज नहीं होता। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। मोर फर्दर आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती है। आप मार्केट टूल बना सकते हो फिक्स साइज से, फिक्स रेशियो से, विच एवर यू वांट। आप चाहते हो तो यहाँ पे आप हाइट पे रख सकते हो, जैसे कि आई विल कीप 50 पिक्सल्स विड एंड आई विल कीप हाइट ऑल्सो 50 पिक्सल्स। एंटर। ये कंट्रोल ए प्रेस हो गया मुझसे, तो मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। अब देखिए 50 पिक्सल्स करने के बाद वही साइज के मार्केट रूल्स बनते हैं। ये सर्कल क्यों हो रहा है? फेदर की वजह से, 20 पिक्सल्स फेदर की वजह से, जिसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सी। सी, it will be. Okay, so in this video tutorial, I'll be teaching you only this much. In the next tutorial, we'll be continuing some more options related to the market tool and to the tool panel. Thank you for attending this lecture. Happy learning.